Meanwhile, the National Capital Territory Amendment Bill will face the test in Rajya Sabha today after being passed in the Lok Sabha. Now, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has raised objections to it, saying that it's in violation of the Supreme Court order. The Congress Party also supports the Aam Aadmi Party in this context. Let's listen into Ayushman's report. देखिए, ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। दिल्ली को जो विधानसभा मिली वो संविधान के 69वें संशोधन से मिली, और अगर आपको एक विधानसभा संविधान के संशोधन से मिली है तो कोई परिवर्तन संविधान के संशोधन के माध्यम से ही आप कर सकते हैं, और उसके लिए 2/3 बहुमत होता है, राज्यों की सहमति होती है। आप जबरदस्ती करके एक अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में लेकर आए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के आदेशों के भी खिलाफ है। चुनी हुई सरकार को जो लोग चुने हैं अपने प्रतिनिधि को, उसका कोई वहाँ पर रोल नहीं रहेगा। एंटी पीपल है और जनता के खिलाफ जो चीज़ें हैं उसके लिए हम अपोज करेंगे। सब मिलके राज्यसभा में जब बिल आएगा हम सब लोग मिलके उसको विरोध करेंगे। The bill aimed at bringing amendment in the National Capital Territory of Delhi is being tabled in Rajya Sabha. Aam Aadmi Party MP in Rajya Sabha, Sanjay Singh, wrote to the chairman and said that this bill is in complete violation of Constitution and Supreme Court's order, and that's why it should not be brought in the House. The BJP has got the numbers, but the Aam Aadmi Party feels that even when it receives the precedent assent, they will go to Supreme Court and challenge it. While the Aam Aadmi Party claims that this bill is being brought to give additional power to the Lieutenant Governor when the executionary power are there with Aam Aadmi Party, which is the elected government, the centre feels that in the older provision of this bill, the term authority is not actually making it clear to what is the task assigned to Delhi government and Lieutenant Governor, and this bill will provide clarity in that. The war of words begin between the BJP and Aam Aadmi Party while the bill is slated to be passed in Rajya Sabha.